Ladies and gentlemen, today I want to talk to you about love. Love is a very, very precious emotion in our lives, and definitely our lives are incomplete without love. But there is something wrong with love, because love lately, by recently or lately I mean in the previous 70 to 80 to 100 years, love has done more harm than the good. So there is something wrong with love, right? No, there's nothing wrong with love. Love is there, love is out there, love is an integral part of our lives. And love comes in every shape, in every relationship. Love is an integral part. Love is what, binds us together. Love is what keeps us together. Love is what makes life livable. It is very important. But something wrong happened, and that has everything to do with the age of romanticism. By the age of romanticism, I mean today and previous some decades. It somehow started after the World War II, when people were generally depressed and they were grieving, and they lost so much financially and in the shape of human relationships. They lost so much that it was the age of depression and grief and sorrow. So then there came an era started where there were poets and there were novelists and there were writers who started writing about love and the emotion, and somehow, and then the movies came, and then the television came, and they all created very, very imaginative, very creative, but very imaginative, unreal construct of love. Let me tell you what is wrong with romanticism, or the age of romanticism that we are living in. There are certain things that are completely wrong with romanticism, and that is that because of this novels and movies and so many stories that we get to hear, चाहे वो हीर रांझा की हों या फिर वो मुझे बिल्कुल भूल गया, चाहे वो हीर रांझा हो या वो ससी पुनू हो या फिर उसके बाद बनने वाली जो मूवीज़ हैं, चाहे वो बॉलीवुड से आएँ, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चाहे वो हॉलीवुड की मूवीज़ हों, चाहे वो नॉवेल्स हों जो कि रोमांटिक नॉवेल्स या जो फिर लव स्टोरीज़ बेस्ड होते हैं नॉवेल्स, चाहे वो हों, चाहे हमारे आजकल के ड्रामाज या पिछले डेकेड के जितने भी आप ड्रामाज देख लें, उसके अंदर जो लव का एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से जो रोमांटिसिज्म की एज है, इन सारी चीज़ों, हमारी पूरी जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्रिएट हो गया लव का, जो कि ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें सफ़र भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम दुख में भी होते हैं, तकलीफ़ में भी होते हैं, और कुछ लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वहाँ से वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इट इज़ डेविस्टेटिंग. इसीलिए बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा भी होगा कि लव इज़ डेविस्टेटिंग एंड लव हर्ट्स यू. मोहब्बत तो होनी नहीं चाहिए. इट स्टार्टेड फ्रॉम लव being something very beautiful, and it ended up, this romanticism age, which is not still ending, but it ended up being devastating and very difficult to deal with. So let me tell you that what went wrong with this idea of love that we are bombarded with through the novels and through the movies and through the TV series. The first misconception is that we all, you, me, and all of us, have a soulmate. Somewhere in the world we have a soulmate. Okay, now what is a soulmate? A soulmate is a person, a perfect girl or a perfect boy who is made for you.
Now, this is not true at all. In this huge population of this world, and there are totally different people living in this world, it is very difficult for one person to find a perfect. Everybody has their own choice, everybody has their own temperament, everybody has different habits, everybody has their own likings and dislikes. So it is almost, if you have studied what you call it probability, the probability is very low that you will find ultimately your soulmate in this life. So the first very assumption that we all have a soulmate, somehow it's in our subconscious mind, somehow we are always looking for you. Ask yourself, aren't you looking for a perfect partner? Aren't I looking for a perfect person to come? Am I not waiting for that perfect person that will come and change my life? She will have this trait and that trait, and she'll understand me now. Stuff like that. So the very first notion, the very first concept that we have in our minds, it is wrong. It is false. रोमांटिसिज्म से पहले इतना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम सब के लिए जो है ना एक कोई सोलमेट है और वो जो परफेक्ट पर्सन है और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और जो है ना फिर उसी के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. इसीलिए जो भी मैं आपको रोमांटिसिज्म के इससे पहले जो अरेंज मैरिजेस थी या फिर जब फैमिली के बड़े डिसाइड करते थे या फिर अगर आपको भी पसंद नापसंद आपसे भी पूछी जाती थी और फैमिली का भी हिस्सा था, मतलब शादियां बहुत आसानी से हो जाती थी और पार्टनर्स बड़ी आसानी से मिल जाते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी पहले कि कोई परफेक्ट लुकिंग जो है ना कोई वुमन होगी, लेडी होगी. पहले आप अपने आप को तो देखें कि आप भी परफेक्ट हैं कि नहीं है, तो लेकिन आपने अपने माइंड में, क्योंकि रोमांटिक मूवीज़ ने और इस सारी चीज़ों ने बनाया हुआ है कि कोई परफेक्ट, और इस तरीके से लड़कियों के माइंड में है कि कोई परफेक्ट बंदा आएगा, कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा कि जो है ना जो फाइनेंशियली भी सिक्योर होगा, जो हर लिहाज से परफेक्ट होगा उनके मुताबिक. और इसी तरीके से जो मर्द हज़रात हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं ये है कि कोई इस तरह की लड़की होगी कि जो है ना हमारे जहन में जो एक इमेज होता है उस तरह की कोई लड़की होगी तो उससे मुझे शादी करनी. तो जब हमें वो सोलमेट नहीं मिलता, अब ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में इमेज है तो हमें वो मिल भी जाता है, डेफिनेटली हमें नहीं मिलता. जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन सच अ ह्यूज पॉपुलेशन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड दैट पर्सन, दैट सोलमेट. अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद क्या होता है, सोलमेट मिलने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ. लेकिन पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल है. तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन एक होती है ना कि अगर मिल भी कोई, अगर आपने शादी कर ली है, अगर आपको कोई इस तरह कोई इंसान मिल गया है तो आप खुश नहीं होते. क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आपने सोचा हुआ था, जहन में बनाया हुआ था. क्योंकि ये जो रोमांटिसिज्म है इसने आपके जहन में एक इमेज बनाया, भाई होती है ऐसी एक लड़की, ठीक है. उसकी वजह से इट ब्रेक्स योर हार्ट. जो इंसान आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़के की ज़िंदगी में एक लड़की जो अपना घर बार सारा कुछ छोड़ के आती है इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करके, और यू आर लाइक okay, I respect her, I'll give whatever I can give to her, my time, my affection, but अंदर से deep down you are damaged because you had the expectation कि कुछ ना कुछ जो है ना परफेक्ट वो जो चीज़ है वो अचीव नहीं हुई है. तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स सबसे पहले तो अफेक्ट होते हैं सिर्फ इस अजम्पशन की वजह से, सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कि देयर इज़ अ सोलमेट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो सोलमेट फॉर ऑल ऑफ अस. अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि जो आपकी पसंद का है, गुड फॉर यू. अगर नहीं मिलता तो दिस वर्ल्ड डजंट वर्क दिस वे कि हर किसी, नॉट एवरीबडी गेट्स everything they want. This life is unfair. I always say that this life is unfair, and it's unfair in different meanings, it's unfair in different ways with everyone. तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़िंदगी से, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं रखनी चाहिए. क्यों? क्योंकि who am I to find a perfect partner? I'm also broken, I'm also imperfect.
I have so many bad habits. I have so many problematic things. I go through so many things. I'm not perfect. My personality, my my status, my different factors that are not perfect in me. Why am I looking for something perfect in that partner that I'll get married to? तो सबसे पहले तो ये बात कि हमें ये इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, इस रोमांटिसिज्म की वजह से एक और जो हमारा नोशन या जो हमारा कंस्ट्रक्ट या जो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में जो अजम्पशन है वो ये है कि जब वो आपको वो सोलमेट मिल जाता है, मिल जाती है, तो वो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू accept you the way you are. This is the biggest, I'm sorry to use this word, this is bullshit. And this is the biggest misconception. This is the biggest, wrongest, is that even a word? This is the most ridiculous expectation that you can have from another person. Ki accept me the way I am. I mean, how? Put yourself in their shoes और थोड़ा सा सोचें इस बारे में कि आपको कहा जाए कि ये इंसान है और यही है बस, और इसने ऐसे ही रहना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, या फिर ये आपके लिए चेंज नहीं होगा, यू नीड टू एक्सेप्ट इट टाइप है। हो सकता है आप कर भी लें उसको एक्सेप्ट, लेकिन वुड यू बी हैप्पी विद दैट? थिंक अबाउट इट, यू वोंट। इसी तरीके से अगर कोई आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जैसे हैं, हो सकता है आपके अंदर बुरी आदत हो सकता है कि कोई इस तरह की इम्परफेक्शन हो आपके अंदर, हो सकता है कि आपके बिहेवियर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हों, तो वो आपको मिल तो गया वो सोलमेट, लेकिन अब टाइम आता है कि उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने का, ज़िंदगी गुजारनी है ना साथ। तो ऐसा नहीं है कि दैट गर्ल, दैट लेडी इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर। थोड़ा बहुत तो यू विल टॉक अबाउट इट कि ओके शोएब, I'm just imagining, okay Shoaeb, we need to talk about this, we need to talk about that, and then I should be very open to the idea of change. Ki, okay, if she is right, if her argument makes any sense, I should bring change in myself, and the same goes vice versa. That अगर मुझे इस तरह की कोई बात लगती है कि उसको कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो उसको चेंज करनी चाहिए, तो I should be able to communicate that to her, that you need to change this particular thing. I love you so much, but we need to talk about this particular thing, and there should be flexibility in a relationship. There should be flexibility to change, and a relationship is a good relationship where you can bring change in each other, you can grow together, you can make a difference in each other's lives. मैं ये नहीं कह रहा कि एक कोई इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आए कि वो कस्टमाइज़ करना शुरू कर दे कि अच्छा ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। I mean, of course, I'm not going to allow that to anybody in this entire world except my parents. So the thing is that if it makes sense, you need to be open to the idea of change, and you should allow your partner to change you, and you should be flexible enough for that. And third, one of the most important misconception, और मैं बहुत ही माजरत के साथ कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये डरते हुए मैं कह रहा हूँ कि फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा है कि कोई एक assumption है कि whatever I am feeling, ये definitely मर्द हज़रात में भी हो सकती है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकंसेप्शन मैंने कहा है कि ज़्यादा है लेडीज़ के अंदर कि ये ऐसे मिसकंसेप्शन के जो मेरा पार्टनर है वो खुद से ही समझ जाए कि how I feel about this particular act, about this particular person, about this particular incident. क्योंकि रोमांटिसिज्म और मूवीज़ ने हमें ये बताया कि लवर्स को तो एक बंदे को तकलीफ़ होती है तो दूसरे बंदे को भी तकलीफ़ होती है, तो ये जो इमोशंस हैं ये तो डेफिनेटली पता होने चाहिए कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का पता होना चाहिए कि हाउ शी इज़ फीलिंग, हाउ ही इज़ फीलिंग राइट नाउ अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस इंसिडेंट, अबाउट द डे और जनरली. So
yes, when you start living together, you get to know each other a lot better. इवन के फ्रेंड्स में भी इस तरीके से होता होगा, अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार इसका ये मुंह बना हुआ है और ये किस वजह से बना हुआ है, लेकिन उसको डेवलप होने में टाइम लगता है, उस रिलेशनशिप को डेवलप होने में टाइम लग जाता है और कभी कभी 5, 6, 7, 8 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर उन 5, 6, 7, 8 सालों में आप कंटिन्यूसली फाइटिंग ओवर दिस कि तुम्हें नहीं पता था कि मुझे क्या मसला है, यू आर आस्किंग मी दिस। हम सब इस चीज़ से जो है ना कहीं गुजरते हैं, कुछ लोग गुजर चुके हैं, कुछ लोग गुजरेंगे इस चीज़ से कि you have went somewhere with your partner and something happened and suddenly her mood changed and she's not feeling good and you sense that, okay, that her mood is not very fine. So you gather the courage to ask her that, is everything okay? And she's like, yes, it's okay. Are you feeling okay? I'm fine. So when she says I'm fine, there is nothing fine in this entire world. Everything is wrong. So you go back to home and you gather your courage one more time and you ask her that, tell me what's wrong. She'll be like, no, nothing is wrong. Everything is fine. And then she locks the door and she cries. So why does she cry? Because she has that assumption in her mind that her husband should have known this already. Somehow he should have the idea that what pissed her off. And I'm telling you that this kind of relationships do builds up in the future, but it doesn't happen so quickly that you just got married and there are 2 to 3 to 4 to 5 to 6 years and you're expecting that person to guess everything. We should not leave things to guessing. ना ही मर्द को ना ही औरत को ये नहीं करना चाहिए कि वो मेरे इमोशंस को गैस कर ले। और इवन के समटाइम्स 5 to 7 to 10 बल्कि 20 years बाद भी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो अगला बंदा या बंदी है उसको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये क्यों मूड ख़राब हुआ है या फिर क्या मसला हुआ है। तो इसका जो सबसे बेहतर तरीका है वो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है, और वो है कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करना। जब आपके जहन से ये अजम्पशंस ख़त्म हो जाएंगी, ये जितने भी मैंने बताई हैं, और स्पेशली जब आपके जहन से ये अजम्पशन ख़त्म हो जाएगी कि अगले बंदे को तो खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे क्या है, तो जब ये अजम्पशंस आप ख़त्म करेंगे तो तब ही आप उसको बता सकेंगी और आप बता सकेंगे कि आप क्यों फील कर रहे हैं, whether you are insecure, whether you are pissed off, whether you are angry, whether you are mad, he didn't wish you birthday, or whatever. So the reason is, just say it, and just say it for the saying, not for making that the next person, not to make that person feel bad. Just communicate. So very simple, 3 assumptions. If you remove all these 3 assumptions, you will live a very contented life. I'm not saying that every problem in your relationship is going to be eradicated because of these assumptions, eliminating these assumptions, but your relationship with your partner is going to be very easy, and it's going to be better. We can only pray. So I will summarize it for you. The first assumption, that we all have a soulmate, it is not really true. We should not expect much from that much from life. There's already so much good in our lives. We have 2 legs, we have 2 hands, we have this tongue, we have eyes. There's so many people deprived of that. There's so much good already in this life. We should be thankful for that. We cannot have everything in this life. So we should be thankful for whatever we have. So we cannot have everything we want. So there's
There is no soulmate for everybody in this world, and if you get to be connected with some person, just accept that person and अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि आपके लिए कोई perfect इंसान बना है. और secondly, जो कि important बात है कि she should not accept you the way you are, and you should not accept her as she is. मैं ये नहीं कह रहा कि again don't get me wrong, I'm not saying कि आप उसके अंदर आके customize करना शुरू कर दें, change करना शुरू कर दें. Yes, उनको आपका जो आपकी कुछ इस तरह की habits हैं, आपका जो मिजाज है, आपकी जो nature है, उसको accept करना चाहिए, क्योंकि that's what who you are. But definitely there are certain habits that can be difficult to deal with, and they are difficult for everybody to deal with. So you should be open to the idea to changing the habits just because of your partner, and you should be open to the idea of growing together, as two wheels of one cart. And the third thing, communication. अब मोहब्बत तो हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मोहब्बत मिल भी जाती है और हो भी जाती है, डेवलप भी हो जाता है रिलेशनशिप, लेकिन उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको सस्टेन करना है कम्युनिकेशन के साथ. आप बताने में कोई हर्ज नहीं है कि बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मूवी एंड दिस इज़ नॉट अ थिएटर और टीवी सीरीज़ कि जो हीरो है उसको पता चल जाएगा कि जो हीरोइन है वो क्या फील कर रही है. डोंट गेट मी रॉन्ग एंड डोंट I hope that it's not offensive, it's not something offensive for you, but that's how it is, and that's how we can make our relationships better, to expect less from life and to expect to be open with each other, with our partner, and open to the idea of change, and grow together and stay together and stay in communication with each other. Communication gap nahi hona chahiye, and that is the true sense of love. तो वो जो फॉल्स लव है, वो जो रोमांटिसिज्म वाला लव है, उसे हमें निकल के अगर हम थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल रियलिटी पे आ जाएं और प्यार तो होता ही नहीं और ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कहता. लव इज़ आउट देयर एंड देयर आर पार्टनर, देयर कपल्स एंड देयर परफेक्ट लुकिंग पीपल, लेकिन वो जो परफेक्ट लुकिंग कपल्स हैं वो इस तरीके से नहीं बनते हैं फॉल्स असम्पशन से. जो परफेक्ट लुकिंग कपल्स हैं, जो परफेक्ट लुकिंग पार्टनर हम जो ज़िंदगी जिसके साथ आपने गुजारनी है, वो इसी तरीके से बनते हैं जो हमने आज डिस्कस किया है. थैंक यू सो मच.